हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं ExMuslim Spartacus और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। दोस्तों, जब तक इस्लाम दुनिया में रहेगा, अमन हमेशा ख़तरे में रहेगा। दुनिया में बहुत सारी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं और इन परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ में कुछ रिलीजियस और कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ शामिल हैं। लेकिन एक बात किसी शक और शुबा के बगैर की जा सकती है और वो ये है कि ज्यूइश कम्युनिटी पर तारीख में जितने जुल्म हुए हैं वो शायद कभी किसी कम्युनिटी पर आज तक नहीं हुए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसराइल वजूद में आया, यहूदियों को इकट्ठा होने का मौका मिला और उनके पास अपना मुल्क था, अपनी ज़मीन थी। लेकिन इसराइल को मिटाने वालों ने उसको मिटाने का ना ख्वाब देखना छोड़ा और ना कभी छोड़ेंगे। जब तक इसराइल इन हरामियों का नामो निशान नहीं मिटा देता, ये इसी तरह के हमले भी करते रहेंगे और इस तरह की सोच भी रखेंगे। अरब इसराइल जंगे हों या आए रोज़ इसराइलियों पर होने वाले हमले, इसराइल के दुश्मन इसराइल के वजूद में आने के बाद से अब तक एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा कि निहत्ते इसराइलियों पर हमले भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी मजलूमियत का रोना भी रोते हैं। कभी गजा अंडर अटैक, कभी मस्जिद अक्सा अंडर अटैक, कभी पैलेस्टाइन अंडर अटैक। इस तरह के हैशटैग्स आपको रोज़ाना की बुनियाद पर देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पर और ये हैशटैग यूज़ करते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपनी मजलूमियत का रोना ये लोग रोते रहते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए इस बार खुलकर हमास और हमास के हिमायतियों का जालिमाना चेहरा सामने आ रहा है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल पर सुबह से हमास ने हमला किया हुआ है और वो भी 3 तरफ से हमला किया है। एक ज़मीनी रास्ते से, दूसरा बाय एयर और तीसरा बाय सी। आयरन डोम एक ज़बरदस्त डिफेंस नेटवर्क है मिसाइलों के अगेंस्ट, लेकिन आयरन डोम की भी अपनी लिमिट्स हैं। एक साथ अगर हज़ारों रॉकेट्स फायर किए जाएंगे तो बेचारा आयरन डोम कितने रॉकेट इंटरसेप्ट कर पाएगा और कितनों को कितने रॉकेट वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा। सुबह से अब तक हमास ने तकरीबन 5000 रॉकेट्स फायर किए हैं, जिससे इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसराइल की रीसेंट हिस्ट्री में ये शायद सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस और सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हमला हुआ है। अब तक टोटल कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है इसकी तादाद ठीक से नहीं मालूम हुई, लेकिन बहुत सारी इसराइली चेक पोस्ट पर हमास का कब्जा हो चुका है। बहुत सारे इसराइली अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत सारे इजरायलियों को किडनैप भी कर लिया गया है। आइए सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ फुटेजेस देखते हैं। תזיזו את הראשים שלכם מפה, תזיזו את הראשים. גם אתה. אוקיי, לא, לא. יש מחבלים פה באזור. Oime, פה לבטה יש. Oime. Oime. I want to give an update on what's been happening here in Israel so far. So around 6:30 a.m., Israelis in southern and central Israel, including here in Tel Aviv, were awoken by sirens and a massive volley of missile fire from Gaza and into Israel. So far, there have been over 2,000 rockets fired into Israel, and as I'm speaking, this is still ongoing. Now, shortly after the first volley, there were reports of armed Hamas terrorists infiltrating Israel, and this, of course, turned out to be true. And there have been many videos circulating on social media and then later on the news of armed terrorists roaming the streets of southern border communities. Now, the IDF has engaged the terrorists
It announced at one point that there were something like 21 active scenes, 21 active engagements with terrorists at different locations. The IDF has managed to neutralize many of the terrorists, but it is still ongoing as I'm speaking right now. And there are, of course, reports of casualties, though there is no official number as of yet. And there are also reports on Palestinian media and Palestinian social media that Israeli civilians and Israeli soldiers have been taken captive by Hamas and brought back into Gaza. Again, these are unconfirmed reports at the moment. Now, I'll add that today is Saturday. Today is a holiday here in Israel, and so this really was a surprise attack. It caught everyone off guard, and now the Israeli response. So the IDF made a very unusual statement saying that Israel should essentially prepare for war. Prime Minister Benjamin Netanyahu made a similar statement shortly a few moments ago, saying that Israel is at war. IDF Defense Minister Yoav Gallant also has agreed to call in all the reserves. So Israel is really preparing for an escalation. And in the meantime, the IDF has launched a counter operation, which it has called Iron Swords. And the Security Cabinet is set to meet today at 1 p.m. To decide how to proceed. Now, I'll also note that today is exactly 50 years and 1 day since the Yom Kippur War, a war which also took Israel by surprise, in which Arab armies invaded Israel. So this is clearly not a coincidence. And in the meantime, Hamas leader Mohammed Daif went on TV in a very unusual address and also called on his Islamic brothers to join in the fighting. He called on Syria, Lebanon, Iranian-backed Hezbollah, and also Arabs in Judea and Samaria, in East Jerusalem, in Israel, to join in the fighting. Now, Israeli defense officials have for months been saying that the next conflict will likely be a multi-front war. So the question really remains how this is going to develop. And of course, I will keep you updated as there are developments. And in the meantime, I want to say that Israel is a very resilient country. Its people are very resilient people. So yes, this was a surprise attack. Yes, this was a devastating attack, and we will no doubt hear of many casualties as the day progresses. But Israelis will no doubt bounce back. And so I will continue to update, and in the meantime, stay safe, everyone. आज 7 अक्टूबर है। इसराइल को मिटाने का ख्वाब ये लोग सन 48 से लेकर अब तक देखते रहे हैं। अरब इसराइल के दरमियान अब तक 4-5 जंगें हो चुकी हैं, और फिर अक्टूबर 73 में इसराइल पर होने वाला इजिप्ट का हमला किसको याद नहीं होगा। इस हमले में इसराइल का वजूद तक खतरे में आ गया था, लेकिन इसराइल तब भी कायम था और इसराइल हमेशा कायम रहेगा। इसराइल ने हमेशा बहुत हिम्मत और सब्र से काम लिया है, लेकिन वो उर्दू की कहावत है ना, तांग आमद बजांग आमद। मेरा ख्याल है कि इस बार इसराइल को किसी सब्र का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके इस हमास नाम के कीड़े को ऐसे कुचलना चाहिए कि शायद आने वाली नस्लें भी कभी सर उठाने का दोबारा ना सोचें। इजराइल हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और इजराइल को ये करना भी चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।